Hello, how are you all, smart brains? A very warm welcome to your friend Prajita's English class. So, we start with the Acknowledge series of your Reader Language Odyssey Class 5, English Reader Class 5 by Amit Publishing House. So, children, today we are going to do chapter number 3, and the chapter name is Narmada. So, let's start the chapter here and see what's there in the chapter. Now, about the lesson. What is in this lesson? Let's read it. You all are familiar with the river Ganga. Everybody knows about the river Ganga, our holy river. The Narmada is another great river of India. Children, Narmada भी गंगा, सबको गंगा के बारे में पता है. हमारी होली रिवर है गंगा, और नर्मदा भी एक it's a great river of India, Narmada. Read this chapter and know more about the Narmada. आज हम इस chapter में नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे. River Narmada. Narmada is one of the greatest rivers of India. It is the longest river in peninsular India. What is peninsular? Land surrounded by water on 3 sides. एक लैंड जो कि तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं पेनिनसुलर. सो as is peninsular India. It is believed to be older than the Himalayan river. हिमालय से जो रिवर निकलती हैं उनसे भी ज्यादा पुरानी है ये रिवर. Scholars say that the rocks it flows over are so old that they were there when dinosaurs walked the earth. इतनी पुरानी है, जब डायनासोर्स हमारे अर्थ पे हुआ करते थे, ये रिवर उतनी पुरानी. Today, Narmada is known all over the world for the large dams that are to be built across it. उसके across, उसके चारों तरफ जो dams built होंगे, उसके लिए नर्मदा जानी जाती. The river springs from the top of Amarkantak, the highest peak of the मैकाल माउंटेन इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश. मैकाल माउंटेन है ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल माउंटेन. वहां से ये रिवर बिल्कुल फ्रॉम द टॉप ऑफ अमरकंटक, बिल्कुल अमरकंटक के टॉप से ये रिवर निकलती है. टू बिगिन इट्स कोर्स ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर्स बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज. विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में ये रिवर जो फ्लो करती है, इसकी लेंथ है 1312 kilometers. It then flows west towards the Arabian Sea. After that, it turns and it takes its turn towards the Arabian Sea until it pours its water into the Gulf of Khambat in Gujarat. गुजरात में Gulf of Khambat है. लास्ट में एंड में जाके ये वहाँ मिलती है नर्मदा. In ancient India, what is ancient? Thousands years in the past, means very old. In ancient India, people thought of rivers as female gods and stories grew around these rivers. पुराने ज़माने में, ancient times में, लोग क्या सोचते थे? Rivers को female gods मानते थे and stories grew around these rivers. इनके बारे में बहुत सारी stories थी. Here is one such story about how the Narmada was born. ऐसे ही नर्मदा के बारे में भी एक स्टोरी है, नर्मदा कैसे पैदा हुई. तो आज हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे. Let's read that story. Once there was a severe drought. All the rivers, lakes and wells went dry. एक बार बहुत भयंकर सूखा. Severe means बहुत भयंकर, और drought का मतलब होता है सूखा पड़ना, जब चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है. तो all the rivers, lakes and wells went dry. सब कुछ सूख गया. The earth became parched. Parched means the scarce of rain. बारिश नहीं हुई कहीं भी. And not a tree had leaves. एक भी पत्ता नहीं था किसी भी पेड़. Birds, animals and people died of thirst as they wandered in vain in search of water. वो चारों तरफ पानी की तलाश में घूमते रहे, पर किसी को कहीं पानी नहीं मिला. And people started dying in scarcity of water. The gods looked down from the sky
अब भगवान ने उससे देखा, their hearts filled with compassion, दया भावना से भर गया उनका दिल, when they saw the sufferings of all living beings on the earth. They thought of Shiva, who had been meditating until then on the peaks of Amarkantak. फिर उनको ध्यान आया कि अमरकंटक में लॉर्ड शिवा मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे. Have mercy on them, great being. Please put an end to their months of thirst. They requested Lord Shiva. सब भगवान ने जाके शिव जी से प्रार्थना की कि अब इनकी प्यास बुझाओ, इन पे दया करो, इन लोगों पे, धरती पे जो लोग हैं इन पे दया करो. Shiva nodded in answer. That sign the gods knew would work wonders. शिवा ने हाँ कर. They went back happy and Shiva went back into meditation. और सारे भगवान सब भगवान चले गए अपने अपने स्थान पे और लॉर्ड शिवा फिर से ध्यान लगा लिया. He meditated so long, so hard that his body began to heat up. उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई. It became so hot that he began to perspire. बॉडी उनकी बहुत ज्यादा हीट अप हो गई थी लॉर्ड शिवा की. River of water streamed down his back and down the mountain side deep into the valley below. इतना गर्म, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप क्या होता है, पसीना आता है ना. Lord Shiva's body also became so heated up that he began to perspire, means पसीना आने लगा उनको, इतना पानी बहने लगा उनके बैक से down his back and down the mountain side, mountain से नीचे भी deep into the valley below. Shiva looked down from the mountain top and saw the stream and he laughed a great laugh. अब उन्होंने जब नीचे देखा और देखा वो पानी बह रहा है, he started laughing. So delighted was he at the sight, he saw that he blessed the sparkling stream. अब उन्होंने देखा कि उस नदी में पानी बहने लगा है, stream में पानी बहने लगा है. You will be scared and will flow forever. You will be sacred. You will be sacred. Sacred जो जिसको पूजा जाता है. I name you Narmada, bringer of hope. जब उन्होंने ये पानी का झरना देखा, पानी बहता हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम, उस स्ट्रीम को कहा जिसमें पानी बह रहा था, कि तुम्हें लोग पूजेंगे. You will be a sacred river now and तुम्हारा नाम आज से नर्मदा होगा. नर्मदा का मतलब bringer of hope, आशा की किरण. To most people, though Narmada is Reva means agile or active. बहुत सारे लोग नर्मदा को agile या active भी बोलते हैं. And that is how the river moves through the hills, dancing and leaping. The Adivasi tribes, the first settlers living along the river side, sing songs about the way Narmada moves and about its changing moods, how calm it can be and how angry. नर्मदा के डिफरेंट मूड्स को जो आदिवासी ट्राइब्स में वहां रहते हैं वो देखते हैं, रोज देखते हैं उस नर्मदा को चलते हुए एंड उसके मूड्स को चेंज होते हुए देखते हैं. The forests along the banks of Narmada were once home to several species of wild animals such as wolves, leopards, bears, pangolins, hyenas, flying squirrels, blackbucks, cheetahs and tigers. पहले नर्मदा के आसपास जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वहां पे ये सब स्पीशीज मिलते थे, रहते थे. But people have been cutting trees year after year and soon most animals lost their shelter and moved away. लोगों ने पेड़ काटने शुरू किए और पेड़ों के कटने के कारण ये सभी स्पीशीज यहाँ से चले गए, किसी और जगह पर चले. Some died out, कुछ मर भी गए. Only a few deer and leopards remained, and crocodiles and monitor lizards which basked lazily on the rocks along the river. कुछ ही leopards और deer वहाँ रह गए हैं, and some crocodiles और monitor lizards जो कि वहाँ धूप सेकते हैं rocks के ऊपर.
Today, the wildlife of this region is protected in the vast Kanha National Park. अब यहाँ पे अब इस वाइल्ड लाइफ की देखभाल कहाँ होती है? कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की देखरेख की जाती है. Animals such as tigers, deers of various kinds, langurs, wild boars, jackals, sloth bears, and panthers roam the forest without fear of being hunted. अभी नेशनल पार्क जब से बना है तब से these animals are safe and secure here. There are many rare birds in the park, such as the jungle fowl and the grey and painted partridge. बहुत अलग-अलग तरह के rare जो कभी-कभी दिखने वाले birds हैं वो भी यहाँ इस पार्क में हैं. A scheme known as Project Tiger has been set up at Kanha to conserve India's tiger species. जो टाइगर स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम का स्कीम चलाया गया. In 1974, the park was declared as tiger reserve to breed and protect the species. टाइगर के स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ इसको क्या डिक्लेयर किया गया था? टाइगर रिजर्व. इसको टाइगर को प्रोटेक्ट करने की जगह. Many आदिवासी still live in the forest and village close to Narmada. जहाँ से नर्मदा बहती है उसके पास बहुत सारे आदिवासी आज भी रहते हैं. Their ways of life are inseparable from the river and the forest. Inseparable means उन आदिवासी की जिंदगी रहने सहने के ढंग को अलग नहीं किया जा सकता है इन रिवर नर्मदा से और वहाँ के जंगल से. Their stories, their songs, beliefs and customs are bound up with the forest, which are in danger of disappearing. If this happens, the tribal will lose their way of life. The Narmada has always belonged to them and they to the river. These Adivasis are very closely connected to the river Narmada and to the forest near it. अगर ये खत्म हो जाता है ये forest, these tribes will not be able, they will live their way of life because उनके लिए नर्मदा ही सब कुछ है, नर्मदा के लिए ये आदिवासी. But for how long will this be? The river that was born to bring water and life back to a dying land is now being called on the same mission. Its route will be changed so that it flows into remote regions in Gujarat and Rajasthan, where there is little rainfall, no big rivers, and where water is always scarce. अब नर्मदा को क्या करा जा रहा है? इस एक मिशन पे लगाया जा रहा है कि इसका रूट बदला जाएगा. नर्मदा का रूट बदल के कहाँ दिया जाएगा? रिमोट रीजन्स, इंटीरियर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है एंड पानी की हमेशा कमी रहती है. The two states have planned to move vast quantities of the river's water into dry, thirsty regions in order to irrigate farmland and to generate electricity to light large number of houses. अब नर्मदा के पानी को इन दोनों स्टेट्स ने, गुजरात और राजस्थान ने प्लान किया है इसके पानी को उस एरिया में भेजने के लिए जहाँ ड्राई है, जहाँ पानी की कमी है, जिससे कि वहाँ पे फार्म्स लैंड्स को इरिगेट किया जा सके और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके और सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल. To carry out their plans, an agency known as the Narmada Valley Authority has been set up. अब इस प्लान को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक एजेंसी का सेटअप किया गया है जिसका नाम है नर्मदा वैली अथॉरिटी. The task of the NVA means Narmada Valley Authority, is to dam the Narmada and the project is the Narmada Valley Project. आपने सुना भी होगा, आजकल बहुत न्यूज़ में आता है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट. So it's that only. The work began in 1990 and is to be completed by 2040. 2040 तक इसको complete करना है.
डैम बनाने हैं, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है। शुरू हुआ था 1990 में। The plan is to build about 30 large dams, 135 middle-sized dams and 3,000 smaller dams across the river over a period of 50 years. इतने सालों के अंदर ये सब चीजें होनी हैं। 30 लार्ज बड़े बड़े डैम्स बनने हैं, 135 मिडिल साइज डैम्स बनेंगे एंड 3,000 स्मॉलर डैम्स बनेंगे across the river Narmada. The biggest of these dams is the Sardar Sarovar Dam at a site between the towns of Bharuch and Vadodara. इसको बड़ौदा भी बोलते हैं। भरूच और वडोदरा के बीच में एक डैम है, सरदार सागर डैम। इज द बिगेस्ट ऑफ दीज डैम, Sardar Sarovar Dam. The dam is intended to supply water to nearly 2 million hectares of farmland. इस सरदार सरोवर डैम से वाटर सप्लाई किया जाता है nearly 2 million hectares of farmland में, जहाँ irrigation। Something to know more. Narmada is also known as the lifeline of Madhya Pradesh. एक नर्मदा ही है जिससे कि इतने सारे यूजेस हैं उस नर्मदा वाटर के, और इसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी बोला जाता है। दिस इज परहैप्स द लार्जेस्ट डैमिंग प्रोजेक्ट एवर प्लान्ड। इससे किसी रिवर पे इतने सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। दिस इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट वन। इट इज दस a subject of discussion among experts in various fields from all over the world. इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत किया जाता है। It is a major project, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। Will it do good? Will it do more harm than good? We'll have to wait and see, some experts say. क्या इससे सबका भला होगा, अच्छा होगा या और ज्यादा बुरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। As we wait, however, we can see the face of tragedy. The dams will almost certainly wash away the homes of 1 million people who live on the banks of the river. अब जो रिवर बैंक्स पे जो लोग रहते हैं उनके घर तो बर्बाद हो जाएंगे जब ये डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे। The pressure of the water of so many large dams may also lead to earthquakes in areas which are already earthquake prone. Earthquake prone means जहाँ earthquakes ज्यादा आते हैं, likely to be affected होते हैं जो, और इनके प्रेशर, डैम्स में प्रेशर बहुत होता है। जब वाटर को रोक लिया जाता है, जब छोड़ा जाता है पानी, तो इतना प्रेशर होता है पानी में, उससे earthquakes आने की संभावना ज्यादा है। Several questions lie before us. Are big dams more damaging than useful? क्या ये बड़े डैम्स ज्यादा डैमेज करते हैं rather कुछ यूज में आने से? Are there other ways of providing water for drinking and farming? क्या दूसरा और कोई तरीका है पानी पीने का पानी अवेलेबल करवाने के लिए या फार्मिंग के लिए? Is water the best source of electricity? Will those who lose their homes be given land somewhere else in their own homeland? These are the questions which are arising all the time. These questions arise. ये सारे questions दिमाग में आते हैं। These questions have troubled large group of people such as environmentalists, social workers, writers and artists from all over the countries. ये questions बार-बार परेशान करते हैं। They have joined the Adivasi people of the river valley in their struggle to save Narmada and the land it flows through. अब इन लोगों ने उन आदिवासी लोगों को ज्वाइन किया है स्ट्रगल मीन्स प्रोटेस्ट में कि नर्मदा को कैसे बचाया जाए। They have set up a number of movements such as the Narmada बचाओ आंदोलन, नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन भी किए गए हैं, और सेव नर्मदा मूवमेंट led by Medha Patil, a very well-known environmentalist. उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। At the heart of these movements is the belief that when we bring hope to some regions, we must not bring tears to others. इस मूवमेंट से क्या बिलीफ जागता है कि अगर
किसी को किसी चीज से होप, आशा की किरण अगर जगाई है तो उनकी आंखों में आंसू नहीं लाना चाहिए. Now, in a nutshell, what this story tells, the origin of a great river, the Narmada. कैसे नर्मदा की उत्पत्ति हुई? The advantages of Narmada. नर्मदा के क्या क्या advantages हैं? किस किस चीजों में कहाँ कहाँ नर्मदा का वाटर काम आता है? So, this was all about the river, the great river Narmada. So, children, now the testing time. जो कुछ हमने पढ़ा है अभी नर्मदा के बारे में, let's see are we able to do the exercises or not. So take the correct options here. Some options are given here. We have to take the correct one. People thought of rivers as male gods, female gods, animals or birds. People thought it as female gods. So take female gods. The gods looked down from the sky, roof, mountain, treetop. They looked down from the sky. He blessed the sparkling star, stream, river, or leaf. Lord Shiva blessed the sparkling stream. In which state is Narmada River located? Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, or Madhya Pradesh? It is located in Madhya Pradesh. So take Madhya Pradesh. Write T for true and F for false statements. The Narmada is believed to be older than the Himalayan rivers. Yes, it is believed to be older than the Himalayan rivers. So write T here. Now moving to next one. Amarkantak. This is, children, there's a correction here. This is Amar. It's R. It's R. Amarkantak. Amarkantak is the highest peak of Maikal mountain. Amarkantak is the highest peak of the Maikal mountain in Madhya Pradesh. Yes, it is the highest peak of Maikal mountain. True. Medha Patekar is a very well-known environmentalist. Yes, it is true. She was there in Narmada Bachao Andolan. She did it. Narmada Valley project is set up to conserve India's tiger species. False. It is false. So the next one is fill in the blanks. Narmada is the longest river in Dash, India. Narmada is the longest river in peninsular India. The river springs from the top of, from where does it springs? It springs from the top of Amarkantak. It pours its water into the Gulf. At last, where it pours its water, Narmada pours its water into the Gulf of Khambat in Gujarat. I name you Narmada, bringer of hope. Narmada is Reva means agile or active. Now, coming to the question answers. Answer the following questions. What do people believe about Narmada's birth? They believe in a story that how Narmada was born, how Narmada took birth. They believe in a story. How did the river Narmada gets its name in the story? Lord Shiva gave the name to Narmada and called her bringer of hope. What was Narmada called by Lord Shiva? Bringer of hope. And Lord Shiva only gave name to Narmada. What is likely to happen to the Adivasis if the forests along the banks of Narmada are destroyed? If the forests alongside the bank of Narmada are destroyed, the tribals will lose their way of life. What does Project Tiger aim to do? Project Tiger aims to conserve India's tiger species. Fine, children? So, let's move ahead. Match the words in column A with the words in column B. We have to match these words, the meaning. We have to find out the meaning of these words. Large. Large means massive. Then dry. Dry means parched.
Meaning of dry is past. Bad. Bad is miserable. Bad means miserable. Simple. Simple means child's play. Is it a child's play? Means is it a is it very simple? Misfortune. Misfortune is tragedy. Misfortune means tragedy, and sympathy is compassion. Sympathy means compassion. Fine, children? Now, each item in the exercise below has two sentences. Read the first sentence to understand what is happening. Expand the second sentence on the pattern had or hadn't been plus ing so that it tells us more about the situation as shown. Now children, जो एक्सरसाइज अभी हम करेंगे उसमें टू पार्ट्स हैं, टू सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस में तो दिया गया है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. अब जो सेकेंड सेंटेंस है उसे हमें चेंज करना है इस फॉर्मेट में. कैसे? हैड या हैडंट बीन लगाना है प्लस आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ. फाइन. सो लेट्स सी व्हाट द एक्सरसाइज इज. I couldn't do my work today and felt very sleepy. ये तो आपको दिया है ये वाला सेंटेंस आपको समझने के लिए कि क्या सिचुएशन. ये दिस इज बीन डन फॉर यू, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. एग्जाम्पल किया गया है आपके लिए समझने के लिए. अब जो सेकेंड सेंटेंस है आई ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक स्लीप वेल फॉर द लास्ट वीक. अब इसमें हमें हैड या हैड नॉट प्लस आईएनजी लगा के कंप्लीट करना है, ये सेंटेंस लिखना है. आई कुडंट डू माई वर्क टुडे एंड फेल्ट वेरी स्लीपी. ये तो वही सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस देखिए कैसे चेंज किया. आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल. आई हैड नॉट बीन लगाना था. स्लीप का क्या हो गया? स्लीपिंग. स्लीप में हमने आईएनजी लगा दिया. स्लीपिंग वेल फॉर द लास्ट. ये नेक्स्ट वाला करते हैं तो हमें और समझ में आएगा. I will not write this sentence again. I'll just change this one. Okay? मैं सेकेंड वाला सेंटेंस चेंज करूंगी आपके लिए. ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. We gave him a lift to school. Fine? ये फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस he wait for the bus in the hot sun. He had been. इसको हम कैसे चेंज करेंगे? He had been. अब वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है. वर्ब क्या है? वेट. वेटिंग. He had been waiting for the bus. बाकी सेंटेंस वही रहेगा. For the bus in the hot sun. Fine. So we complete the sentence like this. Next is they bought a television set yesterday. ये फर्स्ट सेंटेंस है. सिचुएशन समझ में आ गया. उन्होंने कल एक टेलीविजन सेट खरीदा. They save money to buy it for 2 years. They had been. देखिए had been या had not been लगाना है ना. तो उन्होंने टेलीविजन सेट खरीदा. अब उसके लिए उन्हें पैसा इकट्ठा किया होगा तो had been आएगा. They had been. सेव का क्या आएगा? सेव का क्या हो जाएगा? सेविंग. SAVING. आईएनजी लगाना था वर्ब में, हमने आईएनजी लगा दिया. सेविंग मनी. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. टू बाय इट फॉर 2 years. Fine children? So this is the way you have to do this exercise. आपको मैंने 2 करके दिखा दिए हैं. Rest of the exercise you will do it yourself children. You have to just change these sentences. Second sentence को आपको change करना है इस format में. Had या had not और been लगाना है plus verb के साथ ing लगा के sentence complete. Fine? So please complete this exercise. Do it in your notebook. Now children, learn these suffix groups and add any other words that you know to each group. Suffix क्या होते हैं? What are suffixes children? जो word के end में लगता है उसे कहते हैं suffix.
अब देखिए IST, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल, उसके आगे हमने क्या लगाया, IST लगा दिया, उसके बाद तो एनवायरमेंटलिस्ट बन गया। आर्टिस्ट, आर्ट के आगे IST लग गया तो आर्टिस्ट बन गया। साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, वायलिनिस्ट। अब और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें कि हम ये सफिक्स लगा सकते हैं IST? I write here educationist, educationist, IST. Fine, this is a new word. ER suffix, writer, singer, geographer, builder, news reader. Any other word with ER suffix? Photographer. Now see, photographer, PHER, photographer. I have added ER suffix to photograph, so it becomes photographer. OR, inspect के आगे OR लगा दिया तो inspector. Act के आगे OR लग गया actor, sailor, decorator, translator. Any other word? Educator, educator, TOR. Fine. Now the last one is ANT. Assist के आगे ANT लगाया तो assistant बन गया। ये सब suffix लगा रहे हैं। वर्ड के बाद में जो लगता है उसे कहते हैं suffix. Flight attendant, contestant, inhabitant, participant. Any other word? Any other word which is coming to your mind? ANT जिसमें लग सकता है. Participant, inhabitant. Vibrant, ANT, vibrant. Fine. So we have added these suffixes to these words. Fine, children. Now here is an exercise. How are the rivers useful? How are the rivers useful? Rivers हमारे लिए क्यों useful है? कैसे useful है? You have to write down few points here. Why the rivers useful? They provide us fresh water. These waters are used in different ways for washing, bathing, and there are many other uses of the rivers. So please write down the uses of the rivers. Make a list of Indian rivers. Indian rivers कौन-कौन से हैं? I'll write down few. मैं 2-3 के नाम लिखती हूँ, बाकी आप add on करेंगे अपने आप. You all must be knowing about the Indian rivers. The Ganga, main river, the Ganga, the Yamuna, then the Brahmaputra. Ganga, Yamuna, Brahmaputra. There are many more. Kaveri, Godavari, Narmada. So please add on other names also to this list. Fine, children? So children, here we end with our chapter, the Narmada. I hope you have got many information about our river Narmada. जिन्होंने नहीं सुना था नर्मदा का नाम, उनको आज नर्मदा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी. कैसे नर्मदा का जन्म हुआ, क्या है स्टोरी बिहाइंड दिस रिवर नर्मदा. So you have read all the things about Narmada. So we end the chapter here. Stay excited for the next video, which I'll bring to you a new chapter, something interesting, something good, something very knowledgeable. So stay connected till then. Bye bye.